I want you all to pay attention on the board. Today I will be teaching you questions in English. Yes, students. Why I'm teaching you questions and how to answer them. प्रश्न और उनको कैसे आंसर करना है. That is the topic on which we are working today. And let me tell you, I'm not going to teach you the basic things. I will be talking about how you can answer something effectively. You know what? Because your conversation, it completely depends on questioning and answering. If you know how to ask questions and you know how to reply, how to answer, you can communicate with anyone in English. It means your conversation completely depends on questioning and answering. And that's why it is very important to know how to ask questions and how to answer. आप सबसे पहले first we should know the categories of the questions that exist. The questions, the first are called the helping verb questions. Helping verb questions means the questions that start from helping verb. And the second are WH words. Okay. And we are going to practice both the questions right now. You guys have to speak with me because this is the revision class where we'll be talking about questions and answers, and we'll be talking about the advanced questions too. In the book, we have given you 1,500 questions to read to practice so that you can actually learn how to communicate in English and how to speak situational English. You know, the situational English means where you can speak according to situation, where you are supposed to speak, you know, the way the things are required to be spoken. You know the method to speak it. And that's why we should be good at situational English. Now, today we are going to work on questions and answer. You guys have to speak and reply with me confidently, and I know you can. So let's get started. क्या ये आपने किया? Did you do it? Or you can say, have you done it? नहीं, मैंने ये नहीं किया. No, I have not done it. No, I have not done it. No, just try to speak with me. No, I have not done it. क्या आप वही हो जिससे मैं कल मिला था? Come on. क्या आप वही हो जिससे मैं कल मिला था? Are you the same whom I met yesterday? Everybody has to reply. Are you the same whom I met yesterday? क्या आप वही हो जिससे मैं कल मिला था? No, I'm not the one whom I met yesterday. Whom you met yesterday? Yes, I'm the same guy whom you met yesterday. हाँ, मैं वही बंदा हूं जिससे आप कल मिले थे. क्या आप वही लड़के हो जो हमेशा अपना काम समय पर करते हो? Are you the same boy that does his work, who does his work always on time? You know, नहीं, मैं वो नहीं हूँ. No, I'm not the boy. Okay, I'm not the boy who does his work on the time. That does his work on the time. You know, क्या आप इंदौर में रहते हो? Do you live in Indore? क्या आप वही लड़के हो जो इंदौर में रहते हो? Are you the same boy who lives in Indore, that lives in Indore? No, मैं वो नहीं हूँ. वो तो मेरा भाई है. No, I'm not the one. That's my brother who lives in Indore. You know, so that is the thing actually. आप क्या करो, पहले ना ऐसा 20 से 30 40 क्वेश्चंस ऐसे पूछो. क्या ये वही पेन है जो मैंने कल आपको दिया था? This is the same pen that I gave you yesterday. No, this is not the pen which you gave me yesterday. This is the different pen actually. You know, so आप कम से कम 20 से 25 ऐसे क्वेश्चंस बैक टू बैक पूछो अपने आप से. मैं आपसे पूछता हूं, आप इसको रिप्लाई करना. क्या ये वही सेलफोन है जो आपके बर्थडे पर आपके पापा ने आपको गिफ्ट किया था? Is this the same cell phone जो आपके पापा ने आपको बर्थडे पर गिफ्ट किया था? That your father gifted you on your birthday. ठीक है, this is the same cell phone that your father gifted you on your birthday. क्या ये वही कार है? Is this the same car? क्या ये वही कार है जो लास्ट ईयर आपके पास थी? That भी लगा सकते हो, which भी लगा सकते हो. Which you had last year, that you had last year. Next, क्या रोहित वही लड़का है जिसके पापा इंडियन आर्मी में है?
Is Rohit the same boy जिसके पापा, whose father is in Indian Army? Okay. Is Rohit the same boy whose father is in Indian Army? क्या ये वही ब्लैक बोर्ड है जो मैंने पिछले साल, जो आपने पिछले साल खरीदा था? Is this the same blackboard that you bought last year? No, this is not the blackboard which I bought last year. It is different. You know, I just bought this I just bought this board 2 months ago. You know, that was a different board that I bought. Now that board is not in this class. That is in that class. So इस तरीके से आप जो है practically, you know, you need to speak the language practically. और जब आप इस वे में बोलोगे, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड द लैंग्वेज इट विल लुक इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. मैंने कहा क्या ये वही घर है? इज दिस द सेम हाउस? इज दिस ऐसा भी लिख सकते, इज द सेम हाउस, या इज दिस सेम हाउस जो आपने पिछले साल खरीदा था, या दैट यू बॉट, या विच यू बॉट लास्ट ईयर? या क्या क्या ये वही घर है जहां आप बचपन में रहा करते थे? इज दिस द सेम हाउस वेयर यू यूज्ड टू लिव इन योर चाइल्डहुड? लिव इन योर चाइल्डहुड. इज दिस द सेम हाउस वेयर यू यूज्ड टू लिव इन योर चाइल्डहुड? Okay, yes, this is the same house where I used to live in my childhood, you know. So अब आप इन क्वेश्चंस को ऐसे 10 से 15 क्वेश्चंस बनाएं और आंसर करने की आदत डेवलप करें. आंसर करने की आदत डेवलप करना मतलब लाइक आप सबसे पहले तो आपके सामने जो जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उन्हीं के बारे में. क्या वही टीवी जो पिछले साल हमने खरीदा था? इज द सेम टीवी विच वी बोट दैट वी बोट लास्ट ईयर? क्या ये वही चेयर है जो आपने पिछले साल खरीदी थी? इज दिस द सेम चेयर विच यू बॉट लास्ट ईयर? यू नो, तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेंटेंसेस बनाएं और फिर उनको रिप्लाई करें, तो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. सेकंड आपका होता है WH वर्ड्स. आप जब भी किसी से बात करो, whenever you talk with anyone, sometimes you ask the helping of questions, sometimes you ask the WH words. Depends on situation. और कोई भी चीज प्रिपेयर्ड नहीं होती, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि आपको आप ये पूछ लिया तो आगे ये नहीं पूछना है. आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, इट्स अप टू यू. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारी चीजें सिचुएशन के अकॉर्डिंग पूछते हुए आनी चाहिए. और कभी कभी तो डुअल क्वेश्चंस भी होते हैं. अब डुअल इंटरोगेटिव भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं. अभी डुअल इंटरोगेटिव क्या होता है? क्या आप जानते हो वह कहां रहता है? अब इसमें देखो 2 प्रश्न है. एक है क्या आप जानते हो, डू यू नो, वह कहां रहता है, वेयर ही लिव्स. तो इसमें जो पहले वाला है उसको आप क्वेश्चंस बनाओगे, दूसरा वाला तो अफर्मेटिव बनेगा. डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या आप जानते हो वह कहां रहता है? तो एक क्वेश्चन है क्या आप जानते हो, दूसरा क्या है, वो कहां रहता है. तो वह कहां रहता है का वैसे इंग्लिश आप बनाते हो तो बनता है वेयर डज ही लीव. अगर आप इसको अलग से बनाते हो तो आप क्या लिखते हो, वेयर डज ही लीव. ध्यान दीजिएगा, वेयर डज ही लीव मतलब वह कहां रहता है. लेकिन जब इसे आपने सेंटेंस के साथ में बनाया है तो आपने लिखा है डू यू नो वेयर ही लिव्स. कम ऑन, डू यू नो वेयर ही लिव्स. डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या आपको पता है वो कहां रहता है? डू यू नो वेयर ही लिव्स. तो ये देखो, ये यहां पर इस तरीके से बना है. सो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एक्चुअली हाउ दिस थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग. यू शुड नो दिस. मैंने कहा आपने ये क्यों किया, व्हाई डिड यू डू दिस. आपने क्यों किया, व्हाई डिड यू डू दिस. ओके, आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश. आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, व्हाई आर यू टीचिंग इंग्लिश. व्हाई आर यू टीचिंग इंग्लिश. आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, व्हाई आर यू टीचिंग इंग्लिश. ओके, आप किसके साथ वहां जाते हो, किसके साथ का इंग्लिश होता है विथ हुम. ठीक है, आप वहां किसके साथ जाते हो, विथ हुम डू यू गो देयर.
आप वहां किसके साथ जाओगे? विथ whom will you go there? आप वहां किसके साथ गए? with whom did you go there? तो with whom do you go there? with whom will you go there? with whom did you go there? These are the helping verbs, and we all know that how to use them because for the last few days we have been constantly practicing. So we know how to use these helping verbs. Now, what we have to do is that we have to ask the random questions and we have to practice accordingly. So let's begin. Okay. If I say, क्या आपने सुना जो मैंने बोला? Did you listen what I spoke? Come on. इन सारे क्वेश्चंस को अभी आपको आंसर करना है. ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, उसके बाद फिर उसको आंसर करेंगे ना. ऐसे मैंने बोला, क्या आप जानते हो जो मैं जानता हूं? डू यू नो व्हाट आई नो? क्या रीना वही लड़की है जो 10th की टॉपर थी, जो लास्ट ईयर 10th की टॉपर थी? Is Reena the same girl who was the topper in 10th class? Is Reena the same girl who was the topper in the 10th class? Next. क्या आप इस काम को कर सकते हो जैसा मैं कर रहा हूं? कैन यू डू दिस वर्क एज आई एम डूइंग? ठीक है, कैन यू डू दिस वर्क एज आई एम डूइंग? एज मीन्स होता है जैसा. ठीक है, नेक्स्ट. हैव यू, क्या कभी आप वहां गए हो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? हैव यू एवर गॉन देयर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, अबाउट विच आई एम टॉकिंग. नाउ अब आपके पास ही कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनको आपको कम से कम एटलीस्ट इन 3 to 4 lines you have to answer. You know, the condition is that you have to answer in 3 to 4 lines. And why have I put this condition before you? Because when you answer in 3 to 4 lines, you will be able to learn how to answer any question effectively in a long way, you can say. And the common problem that we generally find that after speaking a single line or 2 lines, you know, our mind gets stuck and we don't know what to say next. So if you try to answer in 4 to 5 lines, what will happen? You will learn the technique to speak more. You know, and that's why we have to answer. Now the first question is, did you listen what I spoke? तो आपने कहा no. I did not listen. I didn't listen what you spoke. ठीक है, नहीं, मैं नहीं सुन पाया जो आपने बोला. No, I did not listen what you spoke. अब रीजन दे दो. Because I was busy in my work. I was busy in my work भी होता है, I was busy at my work भी होता है. When you called me, then I felt somebody's calling me. Somebody was calling me. So I could not listen actually when you spoke something. So I could not pay attention on these particular things. Next, do you know what I know? Do you know what I know? क्या आपको पता है मैं क्या जानता हूं? अगर पता है तो yes, I know what you know. या आपने कहा no, I don't know what you know. That's your matter. You're supposed to know this. I don't know anything about it. You know, that's your matter. You should know. I don't know anything about it. आपको पता होना चाहिए इस बारे में, मुझे थोड़ी नहीं पता है. ठीक है, सो आपको ये टेक्निक को समझना होगा that how you guys are actually answering.
आप इसको और लेंदी ले जा सकते हो. Yes, no, I don't know what you know, because I never tried to know anything that you are supposed to know, because that's your cup of tea, to know the things in detail, and I don't have any interest to know about the things that you know. So that's not my business. It's your job, and you are supposed to know these things, and that's why I don't want to know anything about it. Or जानते हो, yes, I know everything, whatever you know. You know what? Wherever you go, whatever you do, whomever you meet, I know everything about it. So whatever you know, I know. Is Rina the same girl that was the topper in the 10th class last year? Yeah, Rina is the same girl who was the topper. That was the topper in the 10th class last year. And she got 99% in 10th standard, and she was the topper of the school. Not the topper of the school, she was the topper in entire country, and she could score these marks with her efforts, and she's very hardworking girl. She's very creative, very intelligent, or Rina. No, Rina is not the girl. That's another Rina. Actually, this is the different Rina. Okay, next, can you do this work as I'm doing? See, I can't do this work as you are doing. You are an expert guy, and I'm not like you. So I cannot do this work as you are doing. You are incredibly great, and you can do it well, so I cannot do like you, So this is the thing. Next, have you ever gone there? Sorry, about which I'm talking. No, I have never gone the place about which you are talking, because that's a strange place for me. I don't know anything about it, and I never try to go over there. So I don't know anything about it. So this is the thing. Actually, you can see over here. Now these questions are written over here, and आपको इन questions की मदद से, with the help of these questions, you guys can actually learn how you can make the sentences. So this is extremely important.